Thank you, sir, for a wonderful highlight. I'd like to start with my first question on GST related issues. This question is for Mr. Sushil ji and Mr. Vivek ji. Either one of you can start, sir. I would like a feedback on the new amendments in the 54th council meeting that was held on the 9th of September. What are the reliefs that were assured? And what are the continued reservations that we have according to you? Hello. Yeah, good evening to all of you. The changes what the GST Council has proposed, I think is known to most of the people. Just for recap, the first change is that now if a person purchased the scrap from unregistered dealer, in that case, the GST has to be paid by him on reverse charge basis. That's the first change. And second change is regarding the TDS. Now this TDS is not the income tax TDS, it's the TDS on the GST side. So what the government has proposed that a buyer, while making a payment to the seller, he will deduct the 2% GST on behalf of the seller and deposit to the government. And ultimately the 2% GST, what the buyer has deducted, it will go and sit in the account of the seller. That's a normal, because the TDS is a new concept of GST. All of us understand the TDS in the context of the income tax. So this is the one major change. But exact modality of this is still not, come out by way of notification. We will have to wait for some time. Now the question here is this, the entire industry have been taking up the issue with the government that in case of because of the fake invoice menace in the industry, fake invoice problem in the industry, can something be done by which the genuine people who are doing the trade and who are basically the manufacturers, they are not get hit by this so-called fake business problem and the rackets and everything there. A lot of suggestions have gone to the government and ultimately this is I think the first time this one suggestion has been accepted, that start the reverse charge mechanism where the scrap is sold by the, say, unregistered person. When I say unregistered under GST, so your scrap, kabadi wala or everything, they sell a scrap to somebody, that the buyer has to pay the GST on reverse charge basis. It looks on paper, looks a little bit of good. Some people are happy about the change. But if somebody asks me very frankly, my opinion is a little different. I will say very, in the plain word. What is the problem of this scrap industry what the entire country is facing from right from 2017 when the GST came? One has to realize this point that this problem is not only of GST. This problem is intertwined with a combination with the income tax issue and the GST issue. I'll tell what happened now. The problem I think all of you are knowing very well, that where the exact problem is happening. Just to recapitulate again now, in the steel industry or a copper or aluminum industry or metal industry, scrap industry, the domestic generated scrap is one of the major source of your scrap. Okay. It may be 20%, maybe 25% in the case of steel, or maybe 40% in the case of copper. It's a domestically generated scrap, what we call it the kabadi wala jo scrap leke aata hai, wo aapka one of the major source of generation of scrap hai. Now that kabadi wala when he brings a scrap and sale to the shopkeeper, he say mere ko to cash mein chahiye, rokda chahiye. He doesn't accept anything check or bank or इंटरनेट बैंकिंग वॉट एवर यू कॉल इट, बोलते मेरे को तो 1000 रुपया 500 रुपया 10,000 रुपये रोकड़ा चाहिए मेरे को, बड़ा वाला होगा तो बोला 50,000 रुपये मेरे को रोकड़ा चाहिए. दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ बेसिकली. अब प्रॉब्लम है दैट द पर्सन जो आपका डीलर है, जो आपका दुकान वाला बैठा हुआ है, उसको स्क्रैप खरीदना, उसको धंधा करना चाहकर वो कैश देगा उसको. अब वो कैश देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकम टैक्स में 10,000 से ऊपर का कैश का आपको डिडक्शन मिलता नहीं आपको जाकर, तो क्या करेगा वो जाकर के? बिजनेस तो करना उसको ना. So then he will try to get the bill from here and there. He will get a scrap from kabadi wala, get the bill from here. And this was the basic problem. मेरी अंडरस्टैंडिंग जो स्क्रैप इंडस्ट्री की आप लोगों से डिस्कस करके मुझे मालूम पड़ी, वो ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम है. अब सपोज द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन दिस रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज होगा क्या? रिवर्स चार्ज में यस 10,000 से कम का परचेज है,
आप रिवर्स चार्ज में GST भर लीजिएगा, अच्छी बात है। टू सम एक्सटेंट मे बी 10%, 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी टू मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ 60-70% जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व इससे शायद नहीं होगी जब तक ये इनकम टैक्स में इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाए। या तो गवर्नमेंट बोले कि 10,000 नहीं, आपको 50,000 रुपये तक का कैश ट्रांजेक्शन अलाउ करेंगे इनके, जब आपका स्क्रैप वाला। एग्रीकल्चर में कैश अलाउड है ना आपका, अगर आप किसी मंडी में जाते हैं, फार्मर आपका आता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का अनाज वो बेच सकता है कैश में जाकर, अलाउड है। तो स्क्रैप के अंदर डोंट अलाउ द अनलिमिटेड अमाउंट, नहीं तो उसका हवाला बिजनेस बढ़ेगा, कई सो मेनी थिंग्स आर देयर। यू अलाउ लिमिटेड 50,000 रुपये तक, लाख रुपये तक का कैश अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है इनकम टैक्स में, देन द एंटायर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आपकी। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। अगर इस इंडस्ट्री को अगर तो रियल में इफ यू वांट टू ब्रिंग इन द अकाउंटिंग लाइन और सिस्टम में लाना है, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। बट चलो एनीवे गवर्नमेंट स्टार्ट किया रिवर्स चार्ज का, एटलीस्ट दे स्टार्ट लिस्टिंग टू यू, सम बेनिफिट विल टेक केयर। So that was my view about this change. This is a major change about the reverse charge and the TDS. TDS has again स्क्रैप में जो 10 करोड़ से ऊपर वाले ट्रेडर्स है, आपको मालूम TCS है इनकम टैक्स में, एक साइड में TCS इनकम टैक्स में, एक साइड TDS आपके GST में। ना गवर्नमेंट इज कवर बोथ बायर एंड सेलर। जब आप TCS पढ़ते हैं तो बायर का अकाउंट इज अंडर चेक, आप बायर के ब्याह पे पढ़ते हैं ना, आप TCS में बायर के ब्याह पढ़ते हैं, बायर के, एंड TDS में सेलर के ब्याह पे पड़ते हैं। तो दोनों साइड से गवर्नमेंट ने बायर और सेलर को कवर कर दिया, TCS इनकम टैक्स में, TDS GST के अंदर। इट्स अ गुड स्टेप। तो थोड़ा बहुत कुछ कम होना चाहिए। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से मोर। Thank you, sir.